Yes, now it is being live streamed. Atulji, you can continue. Please. રેવા લોજ વડોદરા. Yeah, thank you. રોહિત લોજ અમદાવાદ. જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્કલ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના પ્રવચન સૂત્ર સાથે અખંડ રીતે જોડાયેલા રહોના વક્તા વિભા સક્સેનાજી, મિતાલિની મહાપાત્રજી અને શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ તેમજ મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. ધન્યવાદ કેશવરબેન. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. जी अतुल भाई, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Let's begin. I will just give a brief introduction of VIBHA ji. VIBHA ji is a Theosophical Society member of Indian section since 2015. Currently, she is also Secretary of Noida Lodge. She is also President of Delhi TOS region. By profession, she is an IT engineer holding master's degree in computer science. Her IT career saw traveling across the globe, many different countries and home for extended periods of time. This gave her valuable opportunity to know people, cultures, place, while nurturing great reverence towards the life. Crowning glory was access to the wonderful libraries in every place. She is fond of libraries. She continues to be an independent IT consultant and teaches coding to young children, all the while striving in the life philosophy, theosophy side. It is her love for reading which ultimately brought her to the theosophy. वो अपने वैज्ञानिक स्वभाव और जिज्ञासु जो मन है उनका, उसका श्रेय अपने पिता और आध्यात्मिक प्रभाव का श्रेय अपनी माता जी को देती हैं. थियोसॉफिकल सोसाइटी में 6 साल की छोटी अवधि में उन्होंने मैडम ब्लेवस्की और जो महात्मा लेटर्स हैं, महात्माओं के पत्र हैं, उसके प्रमुख कार्यों को गहराई से अध्ययन किया है. वह भारतीय अनुभाग में विभिन्न लॉज में लगातार वक्ता रहती हैं. महिलाएं, जरूरतमंद और बाल शिक्षा कल्याण के लिए काम करती है. And she is really, we are blessed to have her. Please, you can just continue with the today's subject. Thank you. Namaste and a very good evening, dear brothers and sisters. Thank you so much, Taralji, for this wonderful introduction, kind introduction. And I am, in fact, privileged to be here on this platform of the Triveni meeting, which is so regularly hosted by you and all your team. So I'm very thankful to them. Today, I have chosen this topic to speak on keep the link unbroken. So this is not a new topic. All of us who have been associated with Theosophy, they know about it, they have been studying about it. But it is just that if we repeat the things, if those words fall on our ears again and again, then it reinforces. So we hope to reinforce that link. And I have some slides which I will share in the second half.
So about this topic, keep the link unbroken. Most of us know that this was famously the last message which Madame Blavatsky had given for the Theosophical Society before she left her physical body on 8 May 1881. She said, keep the link unbroken. Do not let my last incarnation be a failure. So today we will discuss what she really meant by keeping the link unbroken and what is variously understood by people, what we understand by it, and what we actually put in practice. So this is what we want to examine. Now, link in simple words, what do we understand by link? Link is something that joins or attaches two things. Or it can also serve as a connection, that is a passage from one thing to the other. So there is a subtle difference between these two meanings. See, in the first sense, link is an attachment between two things. It binds. And in the second sense, link is a passage. It allows to move from one thing to another. Now, in our evolutionary journey, we study about how life evolves. So in this evolutionary journey, man has evolved far from what he was when he first appeared on this earth. Theosophy tells us that today we are in the fourth round, fourth globe, and fifth root race. So man has moved from being almost animal-like, from being a brute to being a human. His animal instincts, they have animal instincts like, mechanical behavior, impulsive behavior. This has given way to logic and reasoning ability. And this marks the beginning of human mind. The human mind is at work. Now, in addition, he has also developed the ability for higher thoughts, abstract concepts. And this ability leads him into inquiry. He inquires about the higher aspects of his existence. Knowingly or unknowingly, man is always searching for meaning, trying to find the purpose of his life, trying to find the meaning in his existence. Now, you must be knowing many people, for them, profession gives meaning to their life. Their job, career, some may be in business. So that is what defines their identity. The notion that I am what I do, it is so strong that without it, they may feel themselves to be a nobody. It is their work which gives meaning to their life, links them to life, so to say. I have come across many people who fear getting retired. They don't want to retire from their job. They don't know what to do with themselves if one fine day they wake up and they find that they don't have to get ready and go to office. So that is a kind of fear. Their work, their job, it was the link between them and life. And they may have a feeling of emptiness, of no longer being of use to the society or to the family if they don't work. So if this link goes, they feel absolutely lost. But in reality, do you think profession is a link to life? Profession cannot be the link to life. Life is so much more grander. Its purpose is so much more higher than a career span of 40 years, maybe 50 years. So our work life, job, career, they are necessary. They have their place in our life, but they are transient phases of life. The sooner one realizes this, the more peaceful he will be when moving on to later phases of life. Now, similarly is the situation with our relationships. Someone whom you dearly love. It can be your child, it can be your spouse, a friend, parent, mentor, or anybody. So that person who's so dear to you, he provides meaning to your life. You are so attached to the person, you feel that if the person is no more or if the person leaves, then I'm finished. My life will be not worth living anymore. And this is more common than you might imagine. Death of a loved one or breakup in relationships, or even when children leave their parents' home, maybe for job or for any other purpose,
It feels like the link to life is broken. Now, I remember some years ago when I started my spiritual journey in earnest, I was reading this book. I think some of you must have read it. It is called Living with the Himalayan Masters by Swami Ram. So in that he writes, when his guru cast off his physical body. Now see, gurus, they are Siddha Purush. They can cast off their body or they can take up a body at will. So when his guru, he decided to cast off his body, and he did, his disciples became very sad. They were extremely distraught. So much so that the guru had to return. His physical body was not yet disposed by the disciples, so the guru could return. And he said that it is too bad you still need me in the physical body. You still worship the form and cannot let it go. Your attachment to my body is an obstacle. Then he taught them about the relationship between the body and the soul, which is formless. This is what we need to learn also. In Theosophy, we study about the septenary constitution of man, the stages after physical death, the cycle of reincarnation, and the journey of the soul. Therefore, we must develop the discrimination that attachment to the physical person is a misplaced link. It's an obstacle. Many people want to see the master in physical form. So that is again attachment to the form or the physical body. It is a misplaced link. Just like we become attached to persons, we can also become attached to objects. Someone may become too attached to, let's say, his car, or perhaps his property, or even small things like a piece of clothing. Now, these links are attachment to material objects. If that object is taken away from us or gets destroyed, then it brings great pain in varying degrees. So this link is also false. It is a link of attachment. We spoke of two kinds of link. So this is the link of attachment. We must let go of it. And letting go is called Vairagya. Vivek and Vairagya are the first steps towards spiritual life. That is what we study. So Vivek is to realize the transient nature of the physical body, the transient nature of the material objects. And Vairagya is to let go of the link that binds, that attaches us to what is transient. And for this, it is not necessary that we have to renounce the world or go into the Himalayas and become a sannyasi. No. What is required is mental sannyas. Mental sannyas, it means mental detachment. To give up that thing or that object mentally. Which means that it is not wrong to possess material things or to enjoy them. Sorry. Sometimes people feel guilty if they are enjoying material things or if they are attached to their family. There's no need to feel guilty. It is perfectly okay to possess material things and also to enjoy them in reasonable degree. Because they are, you can consider them, they are blessings of God or they are gift of your good karma. But we should not be pained, nor should we lament if those things are taken away from us due to some circumstances or if those things get destroyed. Also, we should be able to readily give them up. This is more important. We should be able to readily give them up for someone who needs it more than us. So enjoy it while you have it, but do not be bothered if you do not have it or you have to give it up. And similarly for persons, we should definitely cherish our near and dear ones, shower our love upon them, cherish family, but at the same time, always bear in mind the transience of physical body and the permanence of the soul. Just as the physical body of our loved ones is transient, so also ours is. Just as their soul is permanent, so also ours is. Now, this link which we are talking about, it has to be forged to that which is permanent. That is the important point. The love for them, that is for our near and dear people, it has to be from soul to soul.
and that is spiritual love. So the purpose of life, it shifts when we start understanding the truths of higher life. A great soul once said that always remember two things in life: death and God. This essentially means while you live and enjoy life, remember the transient nature of the universe and everything in it. It is all fleeting. It is impermanent. This is denoted by death. Because whatever gets composed, it must also get decomposed. That is why it is called death. And God denotes that which is permanent, eternal, the one reality. Call it Parbrahma, or our innermost essence. When we live from our outermost being, what generally in Theosophy is called as personality, then we are acting from our densest cloak of matter. And the highest truth is our innermost essence, which we are unable to feel or experience. So this link has to be forged from our outermost being to our innermost being, so that our real essence may guide our personality. Now, here I would like to tell you an incident quickly. It was not included earlier, but I just thought of it. Long time ago in newspaper, there was this news article. It said that there was a gentleman from a good family, well dressed, and he went out for his evening walk. And what happened is later he was found, he was quite lost, disoriented, and he was found and taken to the police station. Now, on inquiring that what is his name, he didn't remember. When he was asked his address, he didn't remember. He suffered from this amnesia, loss of memory, and he couldn't remember his name or address. Later on, by God's grace, his family was traced and he was returned home. But this news item, it made me wonder, aren't we all suffering from spiritual amnesia, from loss of memory, like this elderly gentleman? We have forgotten who we really are. We have also forgotten our address, that is our divine origin. And we have mistaken ourselves for this mind-body complex. We have become disoriented by our senses, which are going outwards, pravritti marg, instead of turning inwards, nivritti marg. So we are lost. And there is no police station for us which can help us to trace our divine family. But at the same time, it is true, the masters are there. They are there to point us in that direction. Then it is up to us. We have to put in the effort. We have to remember and become that which we already are. See, we have to become that which we already are. So how can we become something which we already are? We simply have to drop that which we are not. We are not the personality, but we are holding fast to it, not wanting to let go. Only our real self can help us drop that which we are not. And that is why this link is required between what we really are and what we are not. So this link, then it serves not as an attachment, but it serves as a means of communication to allow the light of the higher self to shine upon the lower self. It serves as a passage, and it allows us to transcend the impermanent to abide in the eternal. Now the question is how to forge the link between our transient personality and our permanent higher self. How to keep this link unbroken. This is what is the discussion which I want to take forward. So Taralji, maybe we can give a break here. Yeah, there is still time for you, 3 more minutes. Okay, then I will continue. Yeah. So now I would like to share the slides for this. We want to discuss about how to forge this link between the transient personality and our permanent higher self, and how to keep this link unbroken. So please allow me to share my slides.
So Theosophy tells us that man is that entity in whom the highest spirit and lowest matter is linked. It is linked by the mind. Now, this is a very profound statement and it requires deep contemplation. It clarifies three things. First of all, it makes clear that the highest spirit is already within man. It is not something separate. In fact, it is man. Aham Brahmasmi, even the Upanishads say that. Secondly, it clarifies that the lowest matter is also in the constitution of man. Matter constitutes the various bodies. So, lowest is physical body, the Annamaya Kosh. And these two, the spirit and matter, they are linked by the mind. Mind can move towards the spirit, it can move upwards towards the higher self. Then it becomes Buddhi Manas. And mind can also be moved by desire, by enjoyment of the objects of senses. Then it becomes Kama Manas. So this is how man links, or this is how the mind links spirit and matter in man. This link of the mind, when it moves upwards towards spirituality, it takes us towards spirituality when it moves upwards. And it can also move downwards towards materiality. Spirituality simply means how close you are to the one reality, the ultimate truth. We can see this in the constitution of man, his 7 principles, the Sthula Sharir, Pran, Linga Sharir, Kam, Manas, Buddhi, and Atma. As you move higher, you are closer to the one reality, the Atma, which is our real self, and it is the ultimate reality. And as you move lower, you move towards materiality. So spirituality simply means how close you are to the one reality, the ultimate truth. And when we make use of the knowledge of science or occult science to bring us closer to the ultimate truth, that knowledge becomes wisdom. And this is where science meets spirituality. Science serves as the tool for our spiritual progression. By knowing and studying the septenary constitution of man, occult science serves to bring man closer to one reality. Now let us see how mind becomes the link between spirit and matter. Vibhaji, I think we can stop at this juncture. Okay, sure. So Yes. time is equally divided. Yeah, I'll just stop here. मितालिनी जी वेलकम, और छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा. Everyone knows Mitalini ji Mahapatra joined Theosophical Society around 1991 through Siddharth Lodge, Bhubaneswar. She was secretary of the lodge for 10 years and vice president for Utkal Theosophical Federation from 2017 to 19. She is at present secretary of Mahanandini Nilanchal TOS Group, Puri, as well as president of Siddharth Lodge, Bhubaneswar. She is very active and regularly popularizes Theosophy among young students. She also runs a ladies' hostel, and she has been teaching Theosophy amongst all students. Various TS programs she conducts around Cuttack, Jagatpur, etc. But the main thing is that she is conducting Bharat Samaj Puja daily through online Google Meet, which is something amazing. And fortunate to, when last visit to Adyar, we were fortunate to listen to her Bharat Samaj Puja. And when she came to Bombay also, she did that. Wonderful. And continuously, she is also taking Mahatma letter class on every Sunday, 4 to 5 p.m. through Google Meet. मितालिनी जी वेलकम, और अपनी मधुर उड़िया में आप हमें समझाइए. She speak really very sweet उड़िया. Thank you. सबको मेरा नमस्ते. विभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद. टू द पॉइंट बहुत सुंदर भाव से बताए. Thank you. आज
मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ लॉज को, परल मुंशी जी को और सब भाई बहन को। मुझे आप स्कोप दिए हैं बोलने के लिए। ओडिया में है वो, आज मैं ओडिया में बोलूंगी, लेकिन आप सबको तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओडिया जो टर्म रहेगा थियोसॉफी का वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन उड़िया से जो उड़िया फेडरेशन के लोग हैं वो बाद में देख के और जो लोग हैं वो समझ सकते हैं। धन्यवाद, आप प्लीज आगे बढ़िए। अच्छा, कीप द लिंक अनब्रोकन, संयोग अटूट रहे। मैडम ब्लाभास्की मे 8 1881 मसीह तांकर स्थूल शरीर त्याग करने पूर्व थियोसॉफी सोसाइटी व्यक्ति मानू गोटे मेसेज देते वार्ता देते जहाँकि से लिखिले मोर शेष जन्म वृथा न जाऊ आउ गोटे देते संयोग अटूट रहू। आमे वर्तमान देखिवा आमे तो बुझीगले शेष जीवन वृथा न जाऊ माने शेष जीवन रे से बहुत किछि काम करंतु किंतु संयोग अटूट रहू। एही संयोगटी कोन से देखिले दुईटी स्थान दुईटी वस्तु बा दुईटी व्यक्ति मध्य दूरत्व को संयोग करुथिबा जोटा कि पैसेज बोली कहा जाए, ऊपर स्तर रु निम्न स्तर को आसुथिबा ताको संयोग बोली कहा जाए। तेणु आमे संयोग कौन आमे मनीष भाव में संयोग बोली कौन भाविबा। गोटे मनीष जीवन रे संयोग होची तांकर आत्मा परमात्मा सहित संयोग, देहात्मा जीवात्मा सहित संयोग, जीवात्मार आत्मा सहित संयोग बा आमे जो गुटा कहूछु पर्सनालिटी इंडिविजुअलिटी सहित जोगयुक्त होबा बा संयोग रहिबा। ए विषय जानिया को हेले प्रथमे मनीषर लक्ष्य विषय रे हमको बुझिया को हो। प्रकृत रे मनीषर लक्ष्य कोन विभा जी हमको कहिले जे वर्तमान आमे 4th राउंड 4th ग्लोब 5th रूट रेस रे अवस्थान करूचे जो थरे कि हमर मानसिक स्तर रो विकास हे गलानी। कारण हम मानसिक जदि हमें देखिबा क्रम विकास क्रम रे हमर मानस तृतीय मूल जाति रु पंचम मूल जाति भितर बहुत किछि उन्नति करेछि। जो मानसर उन्नति रे मनीष निजको शिक्षित करेछि आउ से शिक्षा भितर मनीष कोन करिछि ना निजर वृत्ति देखिछि। जेते जेते बड़ पोस्ट ऑफिस बा चाकरी पोजीशन नहीं कि मनीष आगु को बढ़ी आउ से जीवन भितर से जीविका टिकु बा तांकर वृत्ति टिकु बा प्रोफेशन को सबु किछि जीवन बोली भाबिछंती बा सबु किछि भाबिछंती किंतु यह क्षणिक दिने ना दिने से रियलाइज करंती ये जेते जा हेले भी से अनुभव करंती ये सब क्षणिक। ठीक सही परी धन संपत्ति प्रतिपत्ति जहाँ किछि ताहे तांकर से सबु क्षणिक बोली से अनुभव करते जहाँ कि चिरस्थायी नुहे। से जीवन मूल्य को जेपर्यंत न बुझीचंदी तांको से गुरुत्व देइचंदी किंतु जेतेबेले जीवन आध्यात्मिक प्रगति रे ए सबुर मूल्य किछि नाही बा ये मूल्यहीन जानती तापरे से निजर जीवन को बुझीबा को चेष्टा करंती बा निज जीवन गतिपथ कौन से अन्वेषण करंती बा अनुसंधान जारी रखंती। से भितर भी आमर देखा पड़ो ये जीवन भितर आम विभिन्न संपर्क रे आसू आमर अति क्लोज बा अति संपर्क भाव में आमर पिला जी भी हूँ बहुत संपर्क रे आसू आमे तांको स्नेह प्रेम दऊ किंतु सेटा शाश्वत नुहे। से स्नेह प्रेम बदल रे आमे कौन करू ना कष्ट पाऊ। जेतेबेले जड़े आमर अति निकटतर संपर्क चली जाती आमे से भितर बहुत कष्ट अनुभव करू। इवेन आमर धन संपत्ति चलीगला भितर भी आमे बहुत कष्ट अनुभव करू कहीं ना जहाँ हमको दि जाइथिला सेथरे आमे ओतप्रोत भाव जड़ित हो जाऊ एते मोहमाया जड़ित हो जाऊ जे ताहा हमको कष्ट दिए। किंतु जेतेबेले आमे ब्रह्म विद्यार ज्ञान बा एही ज्ञान आमे आमर शिक्षा लाभ करू एही ज्ञान को सद्ग्रंथ अध्ययन करू बा एही ज्ञान लाभ करू विशेष ब्रह्म विद्यार ज्ञान आमे जेतेबेले लाभ कलु जे आत्मा होचंती चिरस्थायी शाश्वत ये सबु जिनिस होची अस्थायी बा क्षणिक बा ए जो शरीर सप्त शरीर मनीषर धारण करिछि या होची अस्थायी। जेते केतेबेले मनीष याको जानिबो जेतेबेले ज्ञान अर्जन करिवे विवेक भाव जागृत हबो धीरे धीरे से एथुरु मन को हटाइबा बा निजर वैराग्य भाव जात हबो और ए सब द्रव्यरु से निजको निवृत्त करिवे बा आ पछरे आ धाइबे नाही। किंतु ये सिना गला मनीष जीवन जेहेतु से कौन करे
माने आउटर जिनिस को हटई दिए किंतु निज मन भितर से जिनिस को हटई पारनी मानसिक स्तर में से जदि से भितर चिंता करेंगे ताहले बहुत भी कष्ट लाभ करेंगे मनस्ताप करेंगे से मानसिक सन्यासी नवा को हम ता माने कौन ना मन भितर संपूर्ण रूपे एक मूलपोच करदेवा हम जी आम केमिति पुणी मूलपोच हम ना जदि आम कर्मर नियम जानिबा कर्म अनुसार भगवान आमको जहाँ देइछन्ति जो धन संपत्ति प्रतिपत्ति बा आमर प्रियजन लोक जी भी आम सामना को आसी आम ताको बेस खुशी रे ग्रहण करिबा धन संपत्ति भी भोग करिबा सेतुर आनंद बा मजा उठेबा किंतु सेतरे ओतप्रोत जड़ित हबानी केतेबेले ना जेतेबेले आम कर्मर नियम को भल करी बुझी जिबा ईश्वर जहाँ देइछन्ति आम ताको ने आनंद रे चलिबा जदि कर्मर नियम अनुसार ताहा आम ठारू छड़ाई निया जाउछि बा सेमाने आम निकटरू चली जाउछन्ति सेतेबेले आम कदापि विषन्न हबानी दुखी हबानी सेतिपई समय भी आमर नष्ट करिबानी ताको आदरे ग्रहण करिनबा से विषय देइछन्ति केवल आदरे ग्रहण करिनबा केतेबेले जेतेबेले जानिबा आत्मा ही शाश्वत चिरंतन और ये सब क्षणशायी ये सब जानिला परे आमे कोन करबा जेतेबेले जानिलु हमर विवेक वैराग्य भाव जात हैला विवेक द्वारा आमे सत असत बा गुरुत्वपूर्ण गुरुत्वहीन विषय जानिलु तापरे आमे वैराग्य भाव जात हैला तापरे आमे कोन करबु तापरे हमर ए मन जो लिंक लखुची हमर निम्न शरीर आ उच्चतर शरीर सहित से मन विषय गोटे संयोग स्थापन हबो जहा द्वारा कि आमे उच्चतर विषय सर्वदा विचार करिबा बा चिंता करिबा से उच्चतर जीवन चिंता करिया पे बुझिया पे हमको दुईटी जिनिस जने महान आत्मा कहिथिले से होची कोन ना मृत्यु एवं ईश्वर आमे जदि मृत्यु विषय जानि जिबा या को बुझी जिबा जे गोटिए शरीर परे गोटिए शरीर विनाश हुए आत्मा गोटिए शरीर परे अन्य गोटिए शरीर नै एमती सात शरीर ग्रहण करंती एई पृथ्वी रे बा एई लोकरे बा सप्त लोकरे कार्य करिया पई आ आत्मा चिरस्थायी ए शरीर गुण क्षण भावर क्षणस्थायी तापरे कौन करबा ईश्वर पुणी किए ना ईश्वर जे शाश्वत चिरंतन सर्वविद्यमान से आमरी भितरे अछंती ए ईश्वर तत्व को जानिया पई आम भितरे गोटे लिंक रही संयोग स्थापन करा जायछि से संयोगटी कौन ना आमर जोटा पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी बा देहात्मा सहित आत्मांकर बा जीवात्मांकर संपर्क को स्थापन करिबा बा सेई भितरे संपर्क गढ़ी रखिबा चिरस्थायी रखिबा बा बजाय रखिबा को आमे से संपर्कटी कहछि से संपर्कटी पुणी किए रखिबो किभरी भाबरे बलवत्तर रहिबो से संपर्क ना ब्रह्मविद्या कहती ए विषय भी हमको बुझिया कहब से संपर्क को हमको जानिया कहब ब्रह्मविद्या कौन कहते ना ब्रह्मविद्या कहते जे आमे ही आत्मा आम यही आत्मा भितर सातटी शरीर रही जितेबाला से आत्मा को आमे बुझिबा जे आत्मा भितर आम भितर रही सातटी शरीर रही उपनिषद रे जो कहगला अहं ब्रह्मास्मि ताकू अनुभव करने आमर कौन ना ये निम्न शरीर गुड़िक को निम्न शरीर गठन ये निम्न शरीर गुड़िक जानिबा नित्यांत आवश्यक जितेबाला आम जानिबा से तीनोटी पॉइंट विभाजी कहले प्रथम होची मनीष ही आत्मा और से ही एक परम तत्व मानव भितर विद्यमान जहाँ को उपनिषद रे ब्रह्मास्मि कहते अहं ब्रह्मास्मि द्वितीय से कहले मानवर निम्न शरीर गुड़िक पदार्थ द्वारा गठित जोटिकी स्थूल शरीर विषय से कहले कारण गोटे हूँ स्पिरिट आ गोटे मैटर पुरुष प्रकृति विषय से कहले तृतीय रे यही दुईटी निम्न शरीर और सर्वोच्च सत्तांग सहित संयोग किए करुची ना मानस तेणु पुरुष और प्रकृति यही दुईटर संयोग करुची किए आम भितर ना मानस ही करुचंती मन जितेबाला उच्चात्मा सहित संयोग स्थापन करती आमे ताको बुद्धि मानस बोली कहू तेणु मन कौन करे जितेबाला बुद्धि सहित मिसी जाए आमे ताको बुद्धि मानस बोली कहू किंतु जितेबाला कामना सहित मन मिसी बुद्धि मिसी जाती सॉरी कामना सहित मन मिसी जाती आमे ताको काम मानस बोली कहू से काम मानस कामना सहित जड़ित होई से सांसारिक विषय वस्तु बा निजर स्वार्थ पर कामना रे जड़ित हो जाती तेणु ये जो बुद्धि सहित संयोग बनाई रखिबा पई हमर बलवत्तर संयोग रहिबा आवश्यक सेति मैडम ब्लाभास्की कहिचंदी जदि मन को आमे पवित्र रखिबा उन्मुक्त रखिबा निर्मल रखिबा ताहले आमे बुद्धि सहित संयोग स्थापन करि परिबा सेति मैडम ब्लाभास्की तांकर गोल्डन चेयर बा सुवर्ण पहाचरे
बहुत सुंदर भाव मन हृदय निर्मल रखा कही दिव्य ज्ञान रूपक मंदिर रे प्रवेश करिया को हेले सुवर्ण पहाच देकी आमको योग स्थापन करिया को पड़िबो से आत्मा तत्व रे आत्मा को सहित मनर प्रकृति होउची कोन ना चलचंचल अस्थिर से मांकड़ परी गोटे डाल रु अन्य डाल को घूरी बुले से कह जाए कि मांकड़र मन बा मंकी माइंड बोली कह जाए जड़े ज्ञानी व्यक्ति कही तुम जदि मन को कहब जे कौन सी विषय भावना करना किंतु मांकड़ विषय भावना अन्य विषय भावना करना केवल मांकड़ विषय भावना कर ताले सेतेबेले मनर प्रकृति होची कोन से मांकड़ विषय ही भावना करि चलिबो तेणु आमे मन किंतु मन को ट्रेनिंग करिवार बा तालीम देवार बा प्रशिक्षण करिवा आवश्यकता रही मन भी हेई पारिबो सेति पई हमको ए चिरस्थायी अस्थायी बुझिबा को पड़िबो सेतरु निवृत्त रहिबा को पड़िबो ए अस्थायी जिनिसरु आ संयोग को बलवत्त रखिया को पड़िबो संयोग बलवत्त रखिया को पड़िले हमर मन को पवित्र शुद्धपुत पवित्र करने को हम से आमको संयोग केतबेले पुणी आम ठार विच्छिन्न हो जाए ना जेतबेले आमर मन यही काम जगत सहित बुद्धि सहित मन ओतप्रोत जड़ित न रही बुद्धिर आज्ञा अनुसार काम न करी निम्न मानस द्वारा परिचालित हुए कामना वासना रे जड़ित ही काम मानसर कार्य करे सेतबेले आम निजर सिद्धि पे काम करू निजर स्वार्थ पे काम करू सेतबेले कौन हो आमे उच्चतर आत्मा ठारू विच्छिन्न हो जाऊ तेणु ये जो संयोगटी केतबेले विच्छिन्न है जेतबेले आमे स्वार्थपर हो जाऊ ये सांसारिक विषय वस्तु रे लिप्त हो जाऊ सेतबेले आमर मन बा ये जो संयोगटी रही उच्च आत्मा ठारू विच्छिन्न हो जाए और निम्न शरीर धरी कार्य करे टाइम है गला 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए हो गया मेरा हो गया अच्छा थैंक यू सेकंड पार्ट फिर या थैंक यू हर्षवर्धन भाई वेलकम थैंक यू मितालिनी जी एक संक्षिप्त परिचय हर्षवर्धन भाई has been recently elected as president of Gujarat PS Federation. So congratulations, sir. And he is BA with English and Hindi, MA with entire English, BEd with English and Geography. He has worked as English teacher in a village area for 7 years. Then for 32 long years, he was with Sri Vidyanagar High School in Ahmedabad and also worked as the principal of the school and then got retired in 2011. He has served as the coordinator of Gujarat SSC board in English subject and set English paper for board exams for 10 years and was also the coordinator of SSC exam assessment of the English. He is always smiling and always ready to do any theosophical activities. Joined Ahmedabad Law in 1972, worked as secretary 76 to 80 and has served president for Rohit Lodge also for 25 years. 1 or 2 years only he had break from any position, but then I think throughout his journey of theosophy, he has always been on a responsible post. And he was also regularly till now, before he was elected president, he was doing a excellent work for editing Theosophic Jyoti for last 6 to 7 years. And now he has handed over it to someone else because he wants to do many more things. So, sir, please, we welcome you and speak on today's subject. Thank you. नमस्कार। नमस्कार। मेरे दोनों बहनें विभा जी और मितालिनी जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ और तरल जी आपको भी और जो 44 सभ्य हमारे आज हमारे त्रिवेणी में है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। श्रृंखला अटूट रहनी चाहिए। 8 मई 1891 का दिन मैडम ब्लेवेट्स्की ने अंतिम सांस ली। पार्थिव शरीर के त्यागने से पहले उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए एक मूल्यवान संदेश दिया। श्रृंखला को अटूट रखना मेरे अंतिम जन्म की फलश्रुति निष्फलता नहीं होनी चाहिए। आज इसी उपलक्ष्य में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वे सही मायनों में क्या कहना चाहती थी। उनके इस संदेश को लोगों ने क्या समझा और हकीकत में क्या हो रहा है। लिंक यानी दो चीजों को जोड़ने वाली कड़ी, अटैचमेंट,
अथवा एक ऐसा गलियारा जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, पैसेज। अब जीवन का हेतु या आशय जो हम देखते हैं तो वर्तमान समय में हम चौथे दौर में है, चौथा गोला, पांचवी मूल जाति। अब मनुष्य जो है वो क्रूरता से ऊपर उठकर मानवता की ओर बढ़ता रहता है, तार्किक शक्ति का वो इस्तेमाल करता है, मतलब कि मनुष्य का मन कार्य करता है यह समझना, उच्च विचारों को संजोना और अपने अस्तित्व के पहलुओं के बारे में खोज करना। जाने अनजाने ही मनुष्य हमेशा से जिंदगी के मायने को ढूंढता रहता है, अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढता रहता है। कई लोगों के लिए उनके व्यवसाय का निजी जीवन में बहुत महत्व होता है, मतलब कि जो मैं करता हूं वही मैं हूं। यह ख्याल इतना गहरा है कि उनके कार्य से ही जिंदगी का मतलब बनता है, या हम या उनको जिंदगी के साथ वो जोड़ता है। हकीकत में व्यवसाय जिंदगी के लिए लिंक नहीं बन सकता। जिंदगी उससे ज्यादा भव्यतम है। उसका हेतु 40 या 50 सालों की कारकिर्दी से भी उच्चतर है। जिंदगी में काम, नौकरी, कारकिर्दी सब जरूरी है, लेकिन ये जिंदगी के क्षणिक या स्थायी स्वरूप। अब आते हैं वो पारस्परिक संबंध के बारे में, उन्होंने जो बात बताई। आगे फिर पारस्परिक संबंध का भी महत्व है। जिन्हें आप अधिकतम चाहते हो वह व्यक्ति आपसे जिंदगी का सही अर्थ बताता है। आप जब उससे जुदा होते हैं तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता, तब जिंदगी दुष्कर हो जाती। स्वामी राम की किताब लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, इसकी बात बताते हुए विभा जी ने यह बात बताई और समझाया कि जब गुरु अपने पार्थिव शरीर का वो त्याग करते हैं तो थियोसॉफिकल साहित्य में भी मृत्यु के बाद की स्थिति, मनुष्य के साथ बंधारणीय स्वरूप, पुनर्जन्म का प्रयोजन और आत्मा के प्रवास के बारे में अभ्यास करते हैं। इसीलिए हमें विवेक बुद्धि को विकसित करने या उसके हेतु वो जानने की पार्थिव स्थिति में व्यक्ति के साथ जो माया बन जाती है वह अयोग्य लिंक है या वह विघ्न स्वरूप है। जिस तरह दुनियावी चीजों से हम लगाव लगा देते हैं, हमारी कार, हमारा मकान, वस्त्र परिधान या हमारे गहने या छोटी छोटी चीजों से जो लगाव हो जाता है वह इस श्रृंखला में बाधक है। ऐसी चीजों के नष्ट होने से काफी मात्रा में हम दुखी होते हैं। ऐसी श्रृंखला या लगाव माया की, उससे मुक्त होना ही वैराग्य कहा जाता है। विवेक का मतलब है जो अस्थायी चीजें हैं उनको जानना और उनसे मुक्त होना। वैराग्य का मतलब है जो हमें बंधन में डालती है, ऐसी क्षणिक अस्तित्व वाली चीजों से मुक्त रहना। कोई जरूरी नहीं कि संसार में हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बनकर हिमालय की ओर चल दें। जरूरत है मानसिक सन्यास की। इसका मतलब है विराग, मानसिक स्वरूप से मुक्त रहना, चीजों की आसक्ति न रखना। संसार में आरामदेह चीजों का तो इस्तेमाल हम करते हैं, उसके मालिक बनकर वो गलत नहीं है, उनको भोगना भी गलत नहीं है। यह तो ईश्वरीय आशीर्वाद स्वरूप है, हमारे अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन इनके छीने जाने पर या नष्ट हो जाने पर दुखी नहीं होना है। और इन चीजों को जो जरूरतमंद है उनको दे देने में भी एक ताकत होनी चाहिए। जब तक सुख सुविधाओं की चीजें आपके पास है तो उनका आनंद उठाइए। अगर आपके पास न रहे तो कोई चिंता मत कीजिए। जिस तरह चीजों के संदर्भ में समझते हैं उसी तरह व्यक्तियों के संदर्भ में भी हमें समझना है। जब तक हमारे करीबी हमारे साथ है उनके पर प्यार बरसाते रहिए, लेकिन याद रहे कि शारीरिक रूप से वे अस्थायी है। सिर्फ आत्मा तत्व ही सनातन है। यह लिंक, यह सेतु जो सनातन है उसके साथ जुड़े रहना। आत्मा से आत्मा का प्यार बना रहता है, यही तो आध्यात्मिक प्यार है। इसलिए जब हम सत्य का गहरा परिचय पाते हैं तब हमारे जीवन का हेतु बदल जाता है। एक महान संत ने कहा था, जीवन में सिर्फ दो बातों को याद रखें, मृत्यु एवं ईश्वर। ईश्वर ही सनातन है।
हमारे बाह्य परिप्रेक्ष्य का सेतु हमारी अंदरूनी चेतना के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हमारा आत्मिक सत्व बाह्य व्यक्तित्व की क्षण भंगुरता में मार्गदर्शक बने। यह लिंक, यह सेतु कोई माया स्वरूप नहीं है, लेकिन संपर्क का सेतु है। उच्चतम आत्मिक प्रकाश को निम्न स्तरीय स्व पर उजागर होने दे, प्रकाशित होने दे। यही सेतु ऐसा गलियारा है जो हमें अस्थायी भूमिका से ऊपर उठाकर शाश्वतता की ओर ले जाता है। अब लिंग का जो प्रस्तापित करना है वो क्या है, वो देखें। थियोसॉफी बताती है कि मनुष्य स्वरूप में अति निम्न स्तर के पदार्थ को उच्चतम आत्मिक स्तर के साथ जोड़ने का काम मन करता है। पहली बात यह निश्चित हो जाती है कि मनुष्य के अंदर ही उच्चतम आत्मिक अद्वैत है। उपनिषदों में उसे हम ब्रह्मास्मि कहते हैं। दूसरा, अति निम्न स्तरीय चीजें भी मनुष्य में निहित है। उसका शारीरिक रूप अन्नमय कोश है। यह दोनों मन के द्वारा जुड़ते हैं। मन उच्चतम एकत्व की ओर मुड़ सकता है, तब वह बुद्धि मनस बनता है। मन इच्छाओं के अधीन भी रहता है, आनंद प्राप्त इंद्रियों के द्वारा वो करता है, तो वो काम मनस बनता है। इसीलिए हमारा मन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें उच्च भुवन की ओर ले जा सकता है, या फिर निम्न स्वरूप में पदार्थों की ओर भी खींचा चला जाता है। तात्पर्य है कि जब शुद्ध मन बुद्धि के साथ जुड़ता है, तब बुद्धि मनस बनता है। यही तो आत्मा और निम्न पदार्थ यानी कि शारीरिक स्वरूप के बीच में लिंक है। जब शुद्ध मन बुद्धि के साथ सम्मिलित होता है, तब बुद्धि मनस बनता है। इसका उच्चतम आत्मिक तत्व के साथ निम्नतम स्थूल शरीर का जुड़ना ही लिंक है। इसी जुड़ने की अवस्था के लिए शुद्ध मन आवश्यक है। मन संपूर्णतः पूर्वग्रहों से मुक्त होना चाहिए। किसी भी शर्तों से परे वो खुला होना चाहिए। 3 बातें बताई: शुद्ध जीवन, खुला मन और शुद्ध हृदय। आतुर जिज्ञासा बुद्धि, चौथी ये बात है। सुनहरी पायदानों को ये दर्शाती हुई मैडम ब्लेवाट्स्की ये कहती है कि सुनहरी सीढ़ियां हमारे और दिव्य प्रज्ञा मंदिर के बीच में सेतु है। अब सेतु के रूप में जो मन है उसकी बात उन्होंने अच्छी तरह से बताई। जो उनके वहां पर जो चार्ट बताया उसमें भी है कि मन का चंचल। Sir, may I please excuse me, sir? This will be in the next part. Okay, हाँ, it will be there in the next part. Okay, sure. I think मेरे ख्याल से तरल जी समय इसके साथ शायद हो रहा है, तो हम इनके साथ चलेंगे। सेतु के रूप में जो मन की बात बताई है उसको लेकर, ठीक है? Right. Thank you so much, sir. I wish to thank my co-speakers, Sister Mitalini ji and Brother Harshvardhan ji, for so beautifully presenting these thoughts in Odia and Hindi. Thank you. Now we will continue the second part of this session, where we want to see how the mind becomes the link between the highest spirit and the lowest matter in man. So please allow me to share my slides once again. Excuse me. Is this shared? No. Okay, No. I'll do it again. Now we can see. Okay. Okay, so we have seen this septenary constitution, and let's see how the mind becomes the link. So we know that in the constitution of man, Atma Buddhi is the higher self. It is the monad. And this is the eternal spiritual uniqueness of each man. Next comes the individuality of man. The higher self along with manas, that becomes the reincarnating individuality, or it is also called Jivatma. This endures from one birth to the next.
Then comes the personality of man. Personality, in each birth, the individuality is linked to a new personality, that is the lower quaternary. And it is linked by the mind, which is moved by desire or calm. So mind becomes the link. When the mind is pure, it is assimilated with buddhi and becomes buddhi manas. This is the link between the highest spirit, that is atma, and the lowest matter, that is our physical body. Therefore, purity of mind is most important. Rather, it is the necessary condition to form the link. The mind should be unbiased, unconditioned, and open. Madam Blavatsky has said, a clean life, an open mind, a pure heart, and eager intellect. So she said this in defining these things. They define the golden stairs, which are the link between us and the temple of divine wisdom. In fact, she also described this link as the antahkarana. It is the link between the upper spiritual triad and the lower quaternary of man. So this link, which is the manas or the mind, this mind by its nature, it is very fickle. Fickle meaning it is always moving from one thought to the next. It is called the monkey mind. But the most important thing is that the mind can be trained. It can be made still. So we have already seen that first we should realize the false link, which are the links of attachment. And this is possible through vivek and vairagya. Next, we have to forge the link to that which is permanent or eternal. So here, purification and training of mind is required. This purification and training is called Shad Sampatti. So Vivek, Vairagya, Shad Sampatti. They are the 6 treasures which we know as Sham, Dam, Uprati, Titiksha, Shraddha, and Samadhan. The same thing is beautifully explained in At the Feet of the Master also. Now, this link of the mind, Madam Blavatsky said, keep it unbroken. Does it mean that the link can be broken? If this is part of our constitution, then how can it be broken? So for that, we must understand that the 7 solar planes, they have 7 subplanes. And in each subplane, the matter differs from the other subplanes due to its fineness or coarseness and due to its responsiveness to the vibrations. So a mind which is totally consumed by desire, which has selfish thoughts, selfish wants, greed, ambition. So it functions through the lower mental matter, meaning the lower 4 subplanes of mental matter. And it can answer to the vibrations of calm or desire only. It is incapable of responding to the vibrations coming from the Buddhic plane. We can say that there is no activity or vibration in the higher mental matter. That is the upper 3 mental subplanes. In such a person, the link between Atma Buddhi and lower quaternary is very feeble, or it can be broken altogether. Such a person is driven by desire and instinct alone. And this is what HPB meant when she said, keep the link unbroken. If the mind cannot respond to the higher vibrations of Buddhi, then light of Buddhi is not conveyed to the lower quaternary. The link is broken because mind is totally divorced from Buddhi. That is the meaning of the link being broken. And it is important for us to understand it so that we can guard against it. Now, we need to build the link. This mind as the link, it can be built. If the mind shows even the faintest response to the vibrations of something good, something noble, virtuous, then all is not lost. It may be a long and arduous journey, but the link to Buddhi, it can be salvaged and re-established. So for that, self-observation and acceptance of our failings, that is the first step. We need to see where we fall short and we need to acknowledge it.
Thereafter, there are many ways and methods to link to the higher self. We won't go into the details. There can be ways to build character, cultivate virtues, purify the mind, meditate. We know about Ashtanga Yoga, HPB's diagram of meditation. We have studied Sadhan Chatushtya. So all these methods, they help to purify the mind and build the link to higher self. Now, in our present stage, we are far from perfect. Though we may study, meditate, and serve, intermittently, our mind may still get clouded by these selfish thoughts and desires. So this threatens the link to the higher self. And therefore, we need to consciously be on guard. We have to be persistent in our effort. Masters have given us one word, that is try. So we must be persistent and continuously keep trying to purify this link. And the more we move towards perfection, the more this link, it will get strengthened. That is why Madam Blavatsky laid most emphasis on purity. To purify our thoughts, feelings, and actions, and to purify our mind and hearts. Now, I don't know if any of you have noticed this paradox, but it's very apparent. Normally, we say that for self-realization or samadhi, mind should be transcended. The mind should be dissolved. But here we are all the while saying that to connect to the higher self, we need the mind. That is the link. So such seeming paradoxes, they abound in the scriptures. They are there literally in all this literature on spirituality. Now, it is for us to discern that what is required at one level, it needs to be let go in the next higher stage. So as we progress spiritually, whatever was the requirement at a lower level is not required at a higher level. The moment we realize these, then these paradoxes are resolved by themselves. So what we need to understand is how the mind is purified. There is a science behind purification of mind. And it is important to understand technically how this purification happens. Else, whatever method we may apply, we may just keep bouncing back to square one. Many people have this complaint that I keep trying so much, but still nothing happens. So we must understand so that the purification is irreversible and permanent. So let's start from the beginning. Universe manifests because the one reality, that is the unity, it polarizes into duality. The primary duality, we know it is spirit and matter, or consciousness and matter. Now this is a very important concept to understand in purification. See, spirit is eternally pure and immutable. It cannot be tainted. It is like the sunlight, whose intensity does not change. But if the sun is obscured by clouds or by trees, then the intensity of the sunlight which is reaching us, it will diminish. And it will be corresponding to the density of the covering of the clouds or the trees. Similarly, the spirit can never change or become impure. But the manifestation of its light and power diminishes when it functions through the coverings of various grades of matter. So what needs purification is matter and not spirit, not consciousness. This is the first point to remember in purification. The second point is, what is purification? Okay. So now this is clear that what needs to be purified is matter, not spirit. Now remember, matter is Pancha Mahabhut, Akash, Vayu, Agni, Jal, Prithvi. And this corresponds to the lower 5 solar planes, the physical, astral, mental, buddhic, atmic. This is the gross manifestation, what we call the cosmic elements. This is the gross manifestation of the subtle tanmatras. The tanmatras are Shabda, Sparsha, Rupa, Rasagandha. So
if you look at this word tan matra, it literally means quantity of that, capital that. That means the one reality. Tat matra, tan matra. So in fact, how can matter also be impure when it is an aspect or a quantity of the one reality? How can we say that it is impure? Actually, impurity simply means the inability of matter to respond to the finer vibrations, which make us aware of the universal truths, or of the higher self, or of the one reality. So it is inability of matter to respond to finer vibrations. Such matter is very coarse, it is gross. And subtle matter, it will readily respond to finer vibrations. So when we speak of purification, purification is an attempt to remove the coarser matter from our bodies and increase the finer matter in our bodies. Physical body, astral body, mental body. This is what is purification. Now, on the other hand, if you see, it is also true that spirit requires matter to manifest. Without matter, spirit cannot manifest, because it is matter which serves as a basis to carry the light and power of spirit. The first manifestation of spirit, that is Atma, it is through the Buddhic substance. Atma manifests in Buddhic substance as the power of omniscience, that is Sarvagya, the power of omnipresence, that is Sarvavyapi, and the power of omnipotence, that is Sarvashaktiman. And this is our eternal being, the monad, which is Sarvagya, Sarvavyapi, Sarvashaktiman, that is Atma Buddhi or monad. And Atma Buddhi or this monad, though it has all these powers, they are manifested in this Buddhic plane, but they cannot directly influence our personality, our lower quaternary. That can be done only through the manas. So how does consciousness manifest on these lower planes? On the mental plane, it manifests as manas or mind. On the astral plane, it manifests as calm or the desire principle. And on the physical plane, it manifests as the power of 5 sense organs and power of 5 organs of action. And through the matter of these different planes, this consciousness functions. This matter of different planes is nothing but our various bodies. So that is how the consciousness functions through our various bodies, physical, astral, and mental. These bodies that we have, the ability of each body to respond to the vibration of the highest sub-plane is an indicator of its purity. We have various bodies. We gave the example, physical, astral, mental, Buddhic, and even the higher bodies. So ability of each body to respond to the vibration of the highest sub-plane, that indicates its purity. Let's take an example. If the mental body is able to respond to the vibrations of 7th mental sub-plane, then it is highly pure. And this is very well explained in Dr. I.K. Temini's book, Self-Culture in the Light of Ancient Wisdom. For purification, the gross matter of our various bodies must get replaced by the subtle or finer matter of that same plane. So the bodies become more and more sensitive and they are able to respond to the finer vibrations. This is the real meaning of purification. And it also applies to the purification of mind. Rather, it is purification of the mental body. So when our consciousness rises towards buddhi, this buddhi manas is functional. And the arup region of our mental body, it receives the subtle buddhic vibrations. These are conveyed to the lower mental, which further guides our thoughts, feelings, and actions. And this is how mind serves as the link between the higher self and the lower quaternary. For this very reason, Madame Blavatsky laid utmost stress on purification, purification of mind and purification of the bodies. In the yogic tradition,
Such purification of body is called Bhuta Shuddhi. This pertains to the Pancha Mahabhut, or the cosmic elements which constitute our body. That is Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. And when a certain level of purification of Bhuta Shuddhi is attained, then it automatically leads to Bhuta Siddhi. Bhuta Siddhi is nothing but control over these elements, or rather the elementals. They are the semi-intelligent beings of that plane. And this power of Bhuta Siddhi was attained by Madame Blavatsky. But that is besides the point. It is not our objective. Our objective is to link to the higher self. And this purification of the mental body, it must be irreversible. It should not fall back. So this can be achieved by regularly practicing virtues, by fixing our mind on high thoughts, noble ideas, by gaining the control which thoughts can enter our mind. This is not a very simple task. To control which thoughts enter your mind, that is very important. Thoughts serve as magnets for similar vibrations from outside. So by regularly focusing on higher thoughts, the gross mental material in our body, it can be replaced by the subtle mental matter. From where does it come? It comes from the surrounding sea of mental matter. We are in that sea of mental matter, from where we can attract the subtle mental matter. And thus our mental body will become increasingly pure, and it will become responsive to these buddhic vibrations. Then our mind will become a channel for the spiritual forces, which are always there. They come from above, from the masters, from our higher self, from the Atma Buddhi, and they are conveyed to our lower quaternary. So our desires, feelings, actions, all are guided by the spiritual light. So this brings us to the concept of yoga, the lower self and higher self. Yoga means duality merges into unity. Duality here is our personal self and the higher self. So these two aspects. And manas, that is the link for yoga. Just as we move from dharana to dhyan to samadhi, in the process, the knower, known, and knowledge merge into one. Similarly, the seeker is linked to the sought by the mind. When the seeker realizes that he himself is the sought, then the seeker and sought become one, and the mind dissolves. This is yoga, self-realization. And this yoga is possible when the sought, or atma, throws its own light on the seeker via the mind. The masters, the self-realized adepts, who are the masters of wisdom and compassion, they are firmly established. They are firmly and irrevocably established in Atma Buddhi, or beyond, of which we have no conception. They have already transcended this physical, astral, mental. And because Atma Buddhi are universal principles, that means they are without boundary. That is why our higher self is literally one with the masters. Because higher self is Atma Buddhi. So our personal self is linked to higher self by manas. This is what we have seen in the discussion till now, which means we are also linked to the masters by manas. Madame Blavatsky was their direct messenger. She was the link between them and us, and she brought their knowledge to us. In the event when she left her physical body, this link on physical plane would be gone. So she urged us to keep the link unbroken, which means we should function through buddhi manas, maintaining the link between them and us, between our higher self and personal self. This link is our link to salvation and to yoga. With this, I end the second part. Thank you so much. Thank you, Vibhaji. It was really wonderful. And
Now I will just request Mitalini ji, please complete in Odia. You have 9 minutes. Thank you. सेकेंड पार्ट रे संयोग किपरि स्थापना करिबा संयोग स्थापना करबा को हेले हमको विभाजी कहले जे श्री गुरु चरण पुस्तक रे हमर षट संपत्ति को अभ्यास करिया को हबो ए षट संपत्ति अभ्यास करबा द्वारा हमें कोन करबा ना हमर लोअर सेल्फ सहित हायर सेल्फ रो संयोग स्थापन करि परिबा पर केते बळे संयोग बनाइबा जेते बळे मन उच्चतर स्पंदन रु किछि भाबरे ग्रहणशील करिवो उच्चतर जो स्पंदन आसुची यदि मन किछि भाबरे ताको ग्रहण करिएको सक्षम हबो ताहले हमें संयोग स्थापन करि परिबा जदिओ एही संयोग स्थापन करिवार यात्रा कठिन अते और समय सापेक्ष हुए तथापि बुद्धि सहित पुनः संयोग स्थापन करि परिबो मानस एथिपई प्रथम पदक्षेप हेउची आत्मनिरीक्षण एवं विफलता को सादरे ग्रहण करि नबा अर्थात विफलता हेला बेले आमे हताशा एबा नै पुनः चेष्टा करिबा सेथिपई अनेक पद्धति बा रास्ता दिया जायछि अष्टांग योग अष्टांग मार्ग मन को पवित्रीकरण करिबा ध्यान करिबा विभिन्न पद्धति विषय रे कुहा गला तेणु उच्च आत्मा का सहित संबंध स्थापन करि परिबा विभिन्न भाव रे वर्तमान स्टेज रे आमे माने केही पूर्णता प्राप्त करि नाउ जदिओ आमे माने अध्ययन ध्यान सेवा करूछु तथापि आम भितरे स्वार्थपर कामना भावना जागृत हो जाउची बेले बेले यह आम भितरे जागृत होउची तेणु जहा कि उच्च आत्मा ठारू हमको विच्छिन्न करि दउची बा संयोग स्थापन करि पारुनी सेथिपई हमको सतत सचेतन रहिबाकू पड़िबो जागृत हेबाकू पड़िबो अविरत चेष्टा करियाकू पड़िबो जहाकू कि से महात्मा कहिसंदे ट्राय जेतेबेले आमे पूर्णता को अग्रसर हबा सेतेबेले आत्मा को सहित संयोग आमर बलिष्ठ हेबाकू लागिबो मैडम ब्लाभास्की शुद्धिकरण उपरे विशेष गुरुत्व देइछंदी आमर कार्य भावना विचार को शुद्ध पवित्र करियाकू हेले मन और हृदय को मध्य पवित्र करियाकू हेबो मन एवं कहीं शुद्ध पवित्र करिबा यार वैज्ञानिक कारण कौन ताहा मध्य दर्शाई देइछंदी एथिपई कौन वैज्ञानिक कारण रहउची ना से एक परम सत्तारु आम समस्त बा विश्वर सृष्टि हेइची विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि हेइची एक और दुई बा पुरुष प्रकृति हेले जहाको भी चेतना पदार्थ बोली कहा गला सेही चेतना प्रकृतिर से तो पवित्र अपरिवर्तनीय सी पुणी कौन परिवर्तन होची जे आमे ताको पुणी प्यूरिफाई करिबा बा शुद्धि करिबा जेमति के बहुत सुंदर उदाहरण देले सूर्यालोक सब बेले उज्जवल जाजुल्यमान सर्वदा रही किंतु जेतेबेले बादल घेरी जाउची सेतेबेले जे हिसाब रे बादल आसुची सेही हिसाब रे हमको सूर्य ग्रहण देखा जाउची ता ठीक भाव रे देखा जाउनी ठीक सेही परी चेतना पवित्र शुद्ध किंतु से जेतेबेले निम्न स्तर रे कार्य करिया पे आछिचंदी सातटी शरीर नैचंदी सेही जो शरीर गुरा एक पदार्थ रे निर्मित होइची सेही शरीर पदार्थर भी गुणवत्ता रहिची सेही पदार्थ गुड़िक चेतनार स्वरूप को बा चेतनार गुणग्राम को कौन करिछि ना ढांकी देइछि बादल घेर परी ढांकी देइछि जहा कि आमे प्रकृत चेतनार स्वरूप को उपलब्धि करि पारनु बा संयोग हमर स्थापन हेइ पारुनी सेतिपे शुद्धिकरण एकांत आवश्यक शुद्धिकरण पुणी कहार करा जिवो बहुत सुंदर भावे कहिले जेहेतु चेतना पूरा पवित्र केवल शुद्धिकरण हम ये मैटर गुड़िकर पदार्थ गुड़िकर एवं आत्मिक और बौद्धिक शरीर आम जो देखा चेतना सर्वविद्यमान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान से आत्मा बौद्धिक शरीर को उपाधि भाव में ग्रहण करी शक्ति एवं ज्ञान प्रकाश करि बुद्धि माध्यम रे आत्मा विकास प्रकाश हुअन्ति शाश्वत आत्मा बुद्धि ही आमर वास्तव रूप किंतु आमे आमर वास्तव स्वरूप को भूली सेही संयोग विच्छिन्न होइछे आम्भे माने सेही संयोग बलवत्त रखिया पे प्रचेष्टा करि चलिबा मन रे प्रश्न आसे एही संयोगर आवश्यकता कौन आवश्यकता रही आत्मा बुद्धि प्रत्यक्ष भाव में आमर निम्न शरीर को प्रभावित करि परिबे नै केवल मानस माध्यम रे ही करि परिबे किंतु बेले बेले यह गोटे विरोधाभास देखा जाए अधिकांश कहती मानस को एड़ाई देकी भी आमे आत्म उपलब्धि करि परिबा किंतु ए जगह रे आमे बुझिबा भूल जदि जने
हायर स्टेज रे जने पहुंची गले से मानसर सहायता न नहीं भी कार्य करि परिबे किंतु आमे जेहेतु शरीर भीतर रहीचे तेणु मानस को नहीं के ही आमे कार्य करिबा सेति पई डायरेक्ट आत्मा ए निम्न शरीर माध्यम रे कार्य करिबेनी से मानस द्वारा ही कार्य करिवे सेति पई हमको कार्य करिया पे मानस को पवित्रीकरण करिया को पड़िबो सेति पई से कहिले जे प्रत्येक लोकरे जेतेबेले आत्मा गोटिए गोटिए स्तर को अवतरण करूचंती से सप्त लोकरे कार्य करूचंती बा सप्तटा प्रिंसिपल बोली से कहिले कार्य करूचंती सप्तटा शरीर माध्यम रे कार्य करूचंती प्रत्येक लोक को भी 7टी उपविभाग रे विभक्त करा जायछि तेणु तळ 4टी ग्रस्तर ऊपर 3टी सटल बोली कहिले सूक्ष्म जहा कि स्पंदन ग्रहण करिया को बहुत ग्रहणशीलता तार रहिछि जो विषय रे आईके ताइमिन सांग विषय रे कहिले से विषय रे सेल्फ कल्चर पुस्तक रे सविशेष वर्णना करिसंती मानस लोकर मध्य 7टी उपविभाग रहिछि जो 3टी के आमे उच्च मानस बोली कहू और तळ 4टी के निम्न मानस कहिथाउ उच्च मानस जेतेबेले बुद्धि सहित युक्त हुअन्ति तांको निर्देश अनुसार कार्य करती ताहले हमर भावना विचार कार्य शुद्ध पवित्र एवं लोकहितकर प्रेममय होइथाय किंतु जेतेबेले आत्मा 4टी निम्न शरीर सहित ओतप्रोत जड़ित भाव में काम करती ताहा द्वारा कौन है हमर स्वार्थपरता बढ़ी जाए तेणु यही जो कार्य को आमको तनखी देखिया को पड़िबो प्रतिदिन मन को पवित्र करिबा पई आमे सजग सचेतन रहिबा जाग्रत रहिया को पड़ो जेमति कि मन भितर मंद विचार आदौ प्रवेश करिवो नै कारण आमे बहुत भल जिनस कहले मैग्नेटिज्म कथा आमे जेमिति विचार करिबा हमर सेमिति भी विचार हमको आसीबो बा अट्रैक्ट करिवो बा आकर्षण करिवो मन पवित्र होई गले यह एक सुंदर माध्यम भाव में कार्य करिवो जो माध्यम दे आध्यात्मिक शक्ति आम भितर प्लावित हबो बा हमर निम्नतर शरीर गुडक से आध्यात्मिक शक्ति रे बलिया नहीं कार्य करिवे बा हमर मन भावना चिंतन कार्य सब किछि आध्यात्मिक मार्ग रे परिचालित हेबो सेति पई से बहुत सुंदर कहले योग युक्त योग पुनी कहा द्वारा किए योग हबो एठी कहले हमर पर्सनालिटी इंडिविजुअली सहित योग युक्त हबो कारण हमर निम्न शरीर गुडिक उच्च शरीर द्वारा योग युक्त हेई परिबो जदि हमर मन निर्मल होई गला तेणु 3टी से कहले आमर योगयुक्त कथा मन देहात्मा उच्चात्मा बा जीवात्मा सहित योगयुक्त हो पारे जीवात्मा आत्मा सहित योगयुक्त हे एकाकार अवस्था को योग बोली कह जाए जितेबाला योगयुक्त हो जाए एकाकार हो जाए से सबकि एकाकार हो जाए ज्ञान ज्ञान ज्ञानता ज्ञ भी एकाकार हो जाती देखुवा लोक देखा वस्तु देख दृश्य सबकि एकाकार हो जाए कौन से डुआलिटी रही द्वैत भाव रही जाए योग मीन सबकि एकाकार हो जाए से ही योगरु आत्मा ही ये शरीर माध्यम रे काम करती बहुत सुंदर भाव से बुझे दि गला महात्मा सहित संयोग महात्मा आमर किए ना कहीं से निर्वाण प्राप्त करिसेंती से बौद्धिक और आत्मिक जगत सहित निजक एकाकार कर योगयुक्त रही लिंक परमानेंट लिंक हो जाए जोटा कि आत्मिक तत्व सहित से सेंटर रही कार्य करुचंती तेणु से महात्मा जे पूर्णता प्राप्त सहित युगयुक्त करने लिंक बनई रखा आमको भी सेमती शुद्धिकरण करने मैडम ब्लाभास्की कथा उल्लेख कहले मैडम ब्लाभास्की लिंक बजाय रही से महात्मा सहित लिंक रखी कहीं से उच्च स्तर सहित संयोग स्थापन करते जहाद्वारा कि महात्मा जहाँ ज्ञान दौले से ही ज्ञान को गोटे मेसेंजर भाव गोटे चैनल भाव आम मान को प्रदान करुले किंतु महात्मा सहित केवल को स्तर में आम कंटाक्ट करा जदि आम बुद्धि मानस सहित मानस बुद्धि सहित योगयुक्त हो बुद्धि मानस द्वारा महात्मा जो स्तर रही बुद्ध बौद्धिक एवं आत्मिक स्तर सहित जब योगयुक्त हो पारिबा ताहले आमे महात्मा वाणी की ग्रहण करिपारिबा जो ज्ञान देउतले से आम मान कही सर्वदा संयोग को अतुट रख को संयोग ना आम भितर जो संयोग रही लोअर सेल्फ सहित हायर सेल्फ से संयोग को जदि आम अतुट रखी पारिबा जदि ताकू
चिरंतन निरवच्छिन्न भाव से आम भितर बजाय रहिबो से संयोग रही पारिबो ताहले आमे से आत्मवाणी अनुसार बा आत्मा बुद्धि तत्व अनुसार जेमति कि आत्मा बुद्धि द्वारा बुद्धि मानस द्वारा कार्य करती एवं मानस निम्न शरीर गुड़ी को परिचालित करती ठीक सही परी आत्मा बुद्धि द्वारा परिचालित करी बुद्धि मानस को परिचालित करेंगे तदनुसार आम कार्य करवा जहा द्वारा आम दिने ना दिने जीवन मुक्त हो पारिबा बा एही जन्म बंधन कर्मरु आम मुक्त पाई परिबा ए विषय धन्यवाद। थैंक यू जी मितालिनी जी, बहुत बहुत ही शानदार था। इट वाज रियली वंडरफुल एंड आई थिंक if it goes to the Odia Federation or Utkal Federation, people will understand the entire talk very beautifully. Yes, Harshavadan ji, you have 9 minutes to sum up. Thank you. दोबारा इस श्रेणी में आगे चलता हूँ जहाँ पर उन्होंने जो बात बताई थी विभा जी ने, तो उन्होंने शुरू किया था दूसरे पार्ट में जो मैडम ब्लेवेट्स्की हमें एक प्रार्थना के स्वरूप में बताती है, शुद्ध जीवन, खुला मन, शुद्ध हृदय और आतुर जिज्ञासा बुद्धि। यानी इन सुनहरी पायदानों को दर्शाते हुए मैडम ब्लेवेट्स्की जो बताती है वो है हमें दिव्य प्रज्ञा मंदिर के बीच में सेतु बनना है और सेतु के रूप में मन है और मन का स्वभाव तो चंचल है, एक विचार से दूसरे विचार पर जाना उसकी फितरत है, उसे बंदर मन कहा जाता है। एक प्राज्ञ पुरुष ने कहा है कि आपके मन को सिर्फ बंदरों को छोड़कर अन्य चीज पर अपना ध्यान लगाए, तब आपको पता चलेगा कि अन्य चीज के सिवा सिर्फ वह बंदर पर ही ध्यान लगाएगा। ऐसा मन का स्वभाव है। लेकिन यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मन को तालीमबद्ध किया जा सकता है। प्रथम विवेक और वैराग्य से गलत सेतुओं को दूर किया जा सकता है, मतलब कि अनित्य से नित्य को जानिए, इस तरह अनित्य से अपने आप को अलग कीजिए। दूसरा, सही सेतु बनाया जा सकता है जो कि सनातन एवं शाश्वत है। इसलिए मन की शुद्धि आवश्यक है, जिसे सत्य संपत्ति कहते हैं। ये है खजाने सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। गुरु चरण किताब में इसी बात को समझाया गया है। अब जो टूटी हुई श्रृंखला है उसके बारे में भी अच्छा समझाया है, वो भी देखें। काम या इच्छा के सिद्धांत पर निम्न स्तरीय आंदोलनों से प्रचालित होने वाला मन स्वार्थ, लोभ, महत्वाकांक्षा, निम्न इच्छाओं में भटक जाता है। बुद्धि स्तर से आने वाले आंदोलनों को वह झेल नहीं पाता और उच्च मनस भूमिका में कोई भी आंदोलन उठता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति में आत्मा बुद्धि का निम्न स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करना बड़ा ही कमजोर होता है। वह सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही व्यवहार करता है। ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं और लोभ वृत्ति के कारण ही मानव जात का इतिहास कई युद्धों का साक्षी है। ऐसे ही लोगों के कारण अकथ्य पीड़ाएं और दुख पनपे हैं। ऐसे लोगों के भारी कर्मों के बारे में निवेदन करना ही नहीं है। अब जो सेतु को बांधता है वो कौन है, कैसे? अगर मन कुछ अच्छाई, उम्दा तत्व या सद्गुण की जरा सी भी झांकी पा लेता है, तब तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि यह अभियान लंबा हो, तकलीफदेह हो, लेकिन बुद्धि तत्व के साथ इसका पुनर्स्थापन हो सकता है। प्रथम कार्य है स्वनिरीक्षण और निष्फलताओं को स्वीकारना। उसके बाद चारित्र घड़तर करना, सद्गुणों को संजोए रखना, मन शुद्ध करना, ध्यान करना और उच्चतर स्व के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए कई पद्धतियां या रास्ते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति में हम पूर्णता से कोसों दूर है। हम अभ्यास, ध्यान या सेवा कर लें, फिर भी अंतर मन में स्वार्थ और इच्छाएं भरी पड़ी रहती है, जो हमारी उच्च स्तरीय सेतु या श्रृंखला के लिए प्रताड़ना है। इसलिए जरूरी है कि जागरूक सुरक्षा, अविरत मेहनत ही सफलता की चाबी है। महात्मा हमें कहते रहते हैं, प्रयत्न जारी रखिए। जितना हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते रहेंगे, उतना ही हमारा सेतु मजबूत बनता रहेगा। मैडम ब्लेवेट्स्की ने ज्यादातर जोर दिया है शुद्धि पर। हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं शुद्ध बनती रहनी चाहिए। हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। यह शुद्धिकरण का विज्ञान है। पूरा ब्रह्मांड एक ही सत्य से उजागर होता रहता है।
एकत्व दो ध्रुवों में बंटता है, सूक्ष्म एवं स्थूल, या चेतन तत्व एवं स्थूल तत्व। चेतना स्वयं शुद्ध और अपरिवर्तनीय है, इसमें दाग नहीं लग सकता। यह तो सूर्य प्रकाश के माफिक है, जिसकी तीव्रता में बदलाव नहीं होता, लेकिन किसी बादल या वृक्ष के प्रभाव में ढक जाता है। तब प्रकाश की किरणों की तीव्रता हमसे पहुंचने में कुछ कम हो जाती है। जितना घनत्व ज्यादा उतनी रोशनी कम। उसी प्रकार चेतना में कोई बदलाव या अशुद्धि होती ही नहीं, लेकिन उसका जो भी स्वरूप उजागर होता है, उनके पदार्थ की श्रेणियों में जो भी परतें बनती है, उसके मुताबिक उसका प्रकाश और शक्ति कम हो जाती है। उसी पदार्थ के हटा लीजिए उसको, तो आपको उसके पीछे मूल स्वरूप की चेतना विद्यमान दिखाई देगी। जिस प्रकार बादलों के हटने से सूर्य दिखाई देता है। इसलिए जरूरी यह है कि पदार्थों का शुद्धिकरण होना चाहिए, और चेतना का तो बिल्कुल नहीं, वो तो शुद्ध ही है। अब प्रगटीकरण के लिए चेतना के पदार्थ की जरूरत है, जो उसका वाहन है। आत्मा की शक्ति और ऊर्जा जो सूक्ष्म पदार्थ वहन करता है, वह है बुद्धि। इसलिए बुद्धि आत्मा की उपाधि है। आत्मा तत्व बुद्धि पदार्थ में प्रकट होता है, जो जिसकी ऊर्जा को हम कहते हैं ओमनिशियंस, यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंस यानी सर्वत्र विद्यमान, ओमनीपोटेंस यानी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, यही हमारा शाश्वत स्वरूप है। लेकिन वर्तमान स्तर में हम इस रियल बीइंग को या उससे हम हट गए हैं। इसलिए सेतु स्थापित करना जरूरी है, जो शुद्ध मन से हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि यह सेतु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा बुद्धि सीधे सीधे निम्न स्तरीय 4 सिद्धांतों पर असर नहीं कर सकते, लेकिन मनस के द्वारा हो सकता है। तो चलिए अब विरोधाभासी जो बातें उनके ध्यान में ले लीजिए। सामान्यतः हमें स्व जागृति या समाधिस्थ होने के लिए हमारे मन को ऊर्ध्व स्थिति में लाना जरूरी है, लेकिन हम यहाँ यह कहते हैं कि उच्चतर स्व के साथ जुड़ना मन की जरूरत तब रहती है। यही सेतु है, यही लिंक है। ऐसे कई विरोधाभासी लगने वाली बातें आध्यात्मिक ज्ञान परोसने वाले धर्मशास्त्रों में है। हमारे लिए चयन करना जरूरी है कि जो एक स्तर तक जरूरी होता है, उसको अगले उच्च स्तर या पड़ाव पर जाने के लिए फेंक देना या छोड़ देना उतना ही आवश्यक है। ऐसा होते ही विरोधाभासी बातों का अपने आप खंडन हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से जो भी हम कार्य करते हैं, हमें उस वक्त मन की मदद चाहिए, जो एक सेतु या चंचल या ऐसी कुछ बात है जो आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाने में शायद बुद्धि तत्व को बाध्य करता है, जो निम्न स्तर पर वहन होकर व्यक्तित्व के स्वरूप का मार्गदर्शक करता है। अब ये जानिए कि मोनाद स्वरूप क्या है। वो है बुद्धि प्लेन या स्तर का, जिसमें चेतना उजागर होती है। मानसिक भुवन पर मनस या मन है। एस्ट्रल स्तर पर वह काम या वासना या इच्छा है। शारीरिक स्तर पर कई 5 इंद्रियों की ताकत है, जो 5 ज्ञानेंद्रिया भी है और 5 कर्मेंद्रिया भी है, वो उसकी ताकत है। अब मोनाद जो है वो उच्च भूमिका पर अपने मूल प्रवाह आत्मा तत्व में विलीन होता है, जो संपूर्णतया स्व की चेतनावस्था है, जिसे मोक्ष या निर्वाण भी कहते हैं। और निम्न स्तर पर वैश्विक भुवनों पर उनके द्वारा आवश्यकताओं का वर्तुल वो पूर्ण करता है। और उच्च मनस का बुद्धि में विलीन होना जीवन मुक्ति है, और काम या इच्छा को निम्न स्तर पर उजागर होना संसार है। काम का उच्च भुवनों में उजागर होने से दैवी इच्छा द्वारा वैश्विक सृजन होता है, और उसका निम्न स्तरीय रूप में प्रकटीकरण होता है। वह व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थ होता है। इंद्रियों के साथ कार्यरत जो भी अंग है, वे अंतर्मुखी होकर मन के साथ जुड़ते हैं, जो उनका ऊर्ध्वीकरण है। जब वे बाह्य स्वरूपों में निम्न स्तर में जुड़ते हैं, तब भोग विलास की वस्तुएं बन जाती है। इस तरह चेतना तत्व कार्यान्वित होता है। हमें विभिन्न भुवनों में जो भी पदार्थ है, उसी के माध्यम से वो उजागर होता है। जब चेतन तत्व इन्हीं माध्यमों में कार्य करता है,
तब पदार्थों के साथ आंदोलित होकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानसिक शरीर इत्यादि आयामों में कार्यान्वित होता है। हर एक भुवन में 7 उपभुवन होते हैं। शुद्धता के स्वरूप के आधार पर जहां भी आंदोलित होता है उसी शरीर की क्षमता वहां घोषित होती है। जैसे कि मानसिक शरीर 7वें उपभुवन के आंदोलनों को झेल सकता है, तब वह उच्चतम स्वरूप में शुद्ध होता है। डॉक्टर आई.के. तैमिनी जी ने अपनी किताब सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम में यही बातें समझाई है। अत्यंत शुद्धता के लिए हमारी जो विभिन्न ठोस स्वरूप के जो हमारे शरीर है उनकी जगह उसी भुवन के सूक्ष्म या महीन स्वरूप के पदार्थ उनका वो स्थान ले, ताकि शरीर ज्यादा उन आंदोलनों को झेल लेने में प्रभावी हो। यही तो शुद्धिकरण का सही अर्थ है। इसी तरह ही मन एवं मानसिक शरीर का शुद्धिकरण प्रयोजित होना चाहिए। अब मन का जो लिंक या सेतु है उसका जो कार्य है उसके बारे में विभा जी ने बताया कि जो 3 मानसिक उपभवन अरूप है, निराकार है, मतलब कि अपने मानसिक शरीर की कोई सीमा नहीं है। जो भी शुद्ध उम्दा विचार होते हैं उन्हें और बुद्धि तत्व के आंदोलनों जो ऊपरी स्तर से आते हैं उन्हें वो झेलता है। अब निम्न 4 मानसिक उपभुवन रूप के होते हैं, जो पहले अरूप के थे अब ये रूप के होते हैं। इनके दायरे में या क्षेत्र में हमारा मानसिक शरीर किसी भी व्यक्तिगत मानसिक शरीर से पदार्थ के नाते अलग होते हैं। जब चेतना बुद्धि की ओर उठती है तब बुद्धि मनस कार्यान्वित होता है। हमारे मानसिक शरीर का अरूप क्षेत्र सूक्ष्म बुद्धिक प्रवाहों को प्राप्त कर निम्न मनस को संदेश पहुंचाता है, जो आगे बढ़कर विचारों, अनुभूतियां और कार्यों का वो मार्गदर्शन करता है। मन का कार्य उच्चतर स्व यानी कि आत्म बुद्धि और निम्न स्तर के बीच सेतु बनाता है। इसी कारण मैडम ब्लेवेट्स्की ने संपूर्ण शुद्धता पर ज्यादा जोर दिया था। योगिक परंपरा में शरीर की शुद्धि को भूत शुद्धि कहते हैं, जो पंच महाभूत या वैश्विक तत्वों से या उसके संदर्भ में हमारे शरीर का बंधारण बनते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यही हेलो हेलो, उनका कनेक्शन शायद चला गया। एनीवे लगभग वो मैडम ब्लेवेट्स्की ने इनको पाया। अब तरल जी ये इन्होंने तो बहुत अच्छा यहाँ बताया। मैंने तो इसका पूरा अनुवाद कर दिया हिंदी में। इतनी बड़ी बातें हैं, बड़ा मजा आया मुझे तो अनुवाद करने में। अभी और रह जाता है, क्या करेंगे? समापन बाकी हो तो 1 मिनट में कर सकते हैं, वरना समापन तो नहीं, ये तो पूरा महासागर है, इसमें मैं तो डूब गया हूँ। समापन तो क्या बात है, वो हो जाए। सही बात है। ये इनकी बातें लोगों से पूछने की। हाँ हाँ हाँ, आपका मैं इसमें थोड़ा सा जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लास्ट में बात बता देता हूँ। जो जीवन मुक्त महात्माओं के साथ जो सेतु है उसकी बात बताता हूँ। और इतनी गहरी बात है जो हमें इतनी सादगी से इसका पता चल जाता है। हम इसमें इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हम उसी भुवन में जैसे हम रहते हैं ऐसा हमें फील होता है। तो लास्ट जो बात है वो 1 मिनट में बता देता हूँ। जीवन मुक्त महात्माओं के साथ सेतु, ये जो है उनका जो पॉइंट, उसके बारे में मैं बताता हूँ जो अंतिम है। जीवन मुक्त महात्माएं पूर्ण पुरुष है। वे आत्म बुद्धि तत्व या उससे भी परे अपने कर्तव्य से जुड़े हैं या दृढ़ता पूर्वक जुड़े हैं, जिसके बारे में हमारे पास कोई धारणा नहीं है। वे शारीरिक, सूक्ष्म और मानसिक स्तरों से परे हैं। वैश्विक चेतना के सिद्धांतों में आत्मा बुद्धि असीमित है। इसीलिए समझ सकते हैं कि आत्मा बुद्धि मास्टर्स के साथ सम्मिलित है, यानी कि ऐक्य स्वरूप में है। हमारा व्यक्तिगत स्व मनस के द्वारा उच्चतर स्वर से जुड़ा है। उसका अर्थ यही होता है कि हम मनस के द्वारा मास्टर से जुड़े हैं, या ज्यादा सही अर्थ में कहें तो बुद्धि मनस के साथ जुड़े हैं। मैडम ब्लेवेट्स्की उनकी सीधी ही संदेशवाहक थी। वो हमारे और उनके बीच की कड़ी थी। वे ही उनका ज्ञान हम तक ले आई।
समय के साथ उन्होंने पार्थिव देह छोड़ दी तो यह कड़ी भी चली जाती। इसलिए उन्होंने हमसे विनती की थी कि यह कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, अटूट रहनी चाहिए। मतलब कि हम बुद्धि मनस द्वारा उनके और हमारे बीच संबंध बनाए रखें। उच्चतर स्व एवं व्यक्तिगत स्व के बीच में कड़ी बनी रहे। यही लिंक या कड़ी या सेतु ही हमारा योग है, यही साल्वेशन है, यही मोक्ष है। अस्तु इति शिवम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया रहा। और विभा जी, आप तो जब भी सब्जेक्ट लाती है तो उसकी कोई भी भाषा में अनुवाद हो और अनुवाद करने वाला अगर थोड़ा सा पारखी हो तो फिर क्या बात है, हर भाषा में उसका एक खूबसूरत चित्रण नजर आता है। अगर आप गुलाब लाती हैं तो वहां पर वो शायद कमल बन जाता है किसी भाषा में, और किसी भाषा में कोई और फूल बन जाता है। बहुत बढ़िया। काफी लोग हैं, कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। सबके पास एक एक 2-2 मिनट का समय है, समय पे समाप्त हुआ है। यस सर, कौन बोलना चाहेगा पहले? वरुण भाई आप कुछ, या जसू भाई बोलिए। After 23 years, I'm again recollecting the pebbles. Those pebbles are not the same which I started with. And every day there is a new pebble. And I say, I'm so glad, such a detail, the way they have explained it. And I started learning the new language from MITALINI. Sanskrit ka kitna words aata hai, so the common language is for everybody. Not Sanskrit only, not Gujarati only, not English only. But every language has its own words. And we pick it up. So I just picked up pebbles. I left my country in 2000. After 23 years, I'm again linking myself to this group again here. I'm hailing from Dar es Salaam, Tanzania. I joined Theosophical Society in 71. And yet I know I'm collecting the pebbles, nothing else. Thank you so much. Thank you, sir. Varun ji had written something in the box, I think, to Vivaji. You can just share your ideas as well as request. Yeah, first of all, very nice presentation. You complicated subject, but you said it in a very simple way, in a way that everybody can understand. No? That is the most important thing, and yeah, really nice session actually. If possible, I just requested the presentation. If you can share that, that will all really help. Sure. Thank you, Varunji. This knowledge, it is not, Theosophy is for all. It is not copyrighted. So of course, the slides can be shared. And Yeah. I've already sent it to Taralji. So probably Taralji, you can share it. Whoever wanted, I will just share it. Yeah. Thank you. Yeah. Yes, Pradeep ji. I'll also share my present. Yeah. Please. Sorry. I will also share my presentation to you in PDF. Maybe you can circulate, which I did. So yeah, I forgot to send it. No problem. Please send it. No problem. Yes, Shinde ji, Pradeep ji, Vimal ji, कोई भी जो बोलना चाहे. I can start because okay. So basically, when the topic was stated, I mean, I thought it will be something connected to the legacy of HPV, because of course the teachings are so deep that we have to keep the link of keeping to studying the teachings. I thought it will be connected to that, but actually this the way she has approached this the HPB saying that keep the link alive, she has taken it in a very different spin and said that you have to take a link to the Buddhi Manas. So this is her creative, Vibhaji's creative, observation of this whole thing, and very interesting. But in this, only one thing I differ from Vibhaji's presentation. In her presentation, she of course talks about the traditional things which are the which we focus even in our Vedanta and all our Hindu tradition for purity. All those things that we talk about purity. But the later teachings of Theosophy, which according to me is Krishnamurti, talks about bringing order in one's mind, in one's emotions. Order. What is order? Order is that, okay, you're clear in your mind where you're going, why you're going, what you're doing, why you're doing. There is no ambiguity. That is order. Order is lack of confusion. So clarity
clear thinking. So it means like, now, for instance, if I through my action cause some sort of discomfort in somebody who's either working for me or living with me or one family member, it could be a very simple thing like I did not message back somebody who messaged me. Somebody has sent me a message, I didn't message that person back. Now my action will cause some amount of discomfort to that person. That person will wonder, why didn't that person message me back? मैंने कुछ पूछा, they didn't message me back. Now your action creates a discomfort, a disorder. This is the meaning of purity. Purity का मतलब यही है कि आप aware है कि कहाँ आप disorder create कर रहे हैं without wanting to. इसमें आप बहुत सारे शब्द डाल दोगे तो आप फिर हो जाओगे और करते रहोगे disorder दुनिया में. बहुत सारा disorder करो. So the thing is, start the mind, not just the mind, the entire system has to be in order. That has to be the focus. So link the, I don't know how one can say, for me the link is there is no link, the whole system is linked. Everything is linked. So it'll stay proper if we focus on order. So, thank you. Vibhaji, you should have some light on it. Yes, that's very nice. This is the Krishnamurti school of thought. This is the Blavatsky school of thought. Thoughts differ. I think ultimately the goal is the same, to reach the higher self. And as I already said in this presentation, there are multiple paths. Whether you follow HPP's diagram of meditation, whether you follow the Advait Vedantic school of thought, whether you do the Raj Yoga, Ashtang Yoga, or whether you follow the J. Krishnamurti of thought, you will ultimately reach there, the Atma. There is no other truth than Atma. That is the reality. And that is the link. We want to forge the link. So link can be anything. For you, it can be something else. For me, it can be something else. That's all I want to say. Thank you. Thank you, Vibhaji. Very nicely put. Yes, Shinde ji, Pradeep ji. Sir, unmute. Yeah, I must first congratulate all the three speakers. Very nicely, I know them all very well. They have studied Theosophy. Even Vimalji also now studied and questions very nicely. So I must congratulate Harshavadan, Mitalini and Vibhaji for very good presentation. So this is the, I also congratulate Vibhaji to take this topic, keep the link unbroken. So this is wonderful. That is what I spoke on this when I gave a talk to Russia. I chosen the same title, keep the link unbroken. That is the last message of HPB as it is mentioned by Vibhaji. Otherwise, it is the mind which is the slayer of the real. And man is expression of God. So God is reality to man. So what is God? Either you call it Atma, monad, or whatever it is. Spirit, Atma, monad. So that is what we call it as the God. And man is the expression of the God. And therefore, God is reality to man. So it is his responsibility to keep his link unbroken with what he is. It is very in simple manner expressed at the feet of the master, that you are the pen in the hands of the masters. So to keep the link, pen must not be proud and break its link with the master. So that is what is expected here. Otherwise, your mind is the slayer of the real, and HPB also focuses on the reality that self of spirit cannot meet the self of matter.
So self of matter cannot meet the self of spirit, which means we must take the work of spiritualization of our matter, of our personality. That is called spiritual self-transformation, which VIBHA explained very nicely with the presentations. So two processes are going on simultaneously, whether you know or not, don't know. But they must accelerate those two processes, which are the materialization of the spirituality and spiritualization of the matter. So these we are getting day by day perfect, purified, because that God reality is expressing through our matter sometimes, and that purifies itself. So this is going on. But the question is, as Vimalji asked, are we aware of this? Wonderful question. Are we aware of? To realize this fact, just experiment yourself. Experiment this with your mind and body. Whether your mind and body, are they synchronized? Are they determined? Find out to what extent it is our atma, it is our will which rules our life. And you realize that most of the time our link is unbroken. Many times it expresses, you are very good, very compassionate, very empathetic, very lovable. But many times this link is unbroken. And that is what we have to remember. Always keep your link unbroken. That is one thing. So here, Atma Buddhi Manasa, as VIBHA explained, Atma Buddhi is higher self. And Manasa is the connecting link, as he said. So Manasa is love, that embracing all in oneness. And Buddhi is to know which is right, which is not right. Yes. And this Atma is the will. That will must express through our daily life. Otherwise, it is not linked. So we must allow that expression of God, which we are ourselves, real beings, must be in our daily life. This is what the aim is. Otherwise, as awareness definitely helps. But Krishnamurti also says, greed, we have much greed. And therefore we are attached to the matter. Manayeva manusyanam bandhanam moksha. So the mind is both cause of liberation as well as attachment. So Krishnamurti says greed trying to become non-greed. Greed trying to become non-greed is still greed. Is still greed. This kind of awareness is required. Greed trying to become non-greed is still greed. We have this greed. We are selfish. We are attached to our personality. And always we are not linked with that which we call Atma or spirit. This is what I want to just express the same thing what very nicely explained all these three people. Really, I must congratulate them very well. I am very happy to and enjoyed the discussion. Thank you, Taralji. Thank you. Thank you, Chandrakantji Shindeji. Yes, Pradeepji, words from you. And thank you for giving me opportunity. I will very short as much as possible. I must congratulate all the three speakers, Brother Harshavadanji, Mitalinji, and VIBHA for nice presentation. I have gone through a study class conducted by P. Krishna. There is a book, Jewel in a Silver Platter, particularly it is for the members of Theosophical Society as well as for the members of the Krishnamurti, followers of the Krishnamurti. There is a book, Theosophy and Krishnamurti, published by KFI Kotak.
suppose unless one read deeply Theosophy, he cannot understand, or she cannot understand Krishnamurti philosophy. And the dialogue between Radhaji and Krishnamurti and P. Krishna, ultimately they have ended that ultimate, the final goal is same as Vibhaji or Vibhaji mentioned. There are different ways, and recently Ravi Rabindran also, if there is a way top from the top, there is a way to down. So also simultaneously, vice versa, there is a way from here to there. But the point is, recently, just today, I have gone through one book, Voice of Silence. There is a quotation from Blavatsky that the holy ones giving a lot of wisdom to us, and we should not be selfish to make it popularized, to make it Theosophy popularized to others. So how it came to my mind that unless we practice ourselves, the teachings given to us by the great holy ones in different books, Secret Doctrine, Mahatma Letters, unless we practice in ourselves in daily life, made it our part of our nature, then we cannot teach. If we teach, if we read something and also not practice in a daily life, then this is not a dissemination of Theosophy. That creates problem within us. We are saying one thing, then and the Secret Doctrine says we are linked with one with each other. That is golden secret, something sutratma, thread, etc. We are not aware of my brother, my sister, even all the 10 lives around us, or we are linked with the one universal spirit or universal soul. Because there lies the selfishness within us. We are not, according to Blavatsky, persevering in our approach to study Theosophy, practicing daily life. That is the reason we are not aware that the brother outside is not not another, it is me self. So this is the process in which Vibhaji explained. Also, Bimalji mentioned, I have also that thought that, and Mahatma in one of his letters mentioned that not be ungrateful for the Blavatsky. Rather, some opinion given that continue the Theosophical Society. That is also another way of let this wisdom be spread, starting from your own self. Then the whole humanity will be benefited. Yes. Thank you, Saralji. Thank you very much. Thank you, sir. And now I think Atulji is not there. If you all permit, we will go towards the prayers. Ishwarji. Haji, please go ahead. Thank you. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणि पादौ न चापस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Thank you so much.